Kindly just confirm if you can see the screen and can hear me loud and clear. Okay, perfect. So we are going to start chapter number 14 और chapter number 14 हमारा है lenses. So this one is very important for paper 1 as well as paper 2. Paper 1 में इसका share रहता है at around 4 marks. So it will have good 3 to 4 MCQs every time. While if we talk about paper 2, तो paper 2 में इसका share जाता है around 6 to 7 marks. Now that could be a bit higher or a bit lesser. Usually 6 to 7 marks के around ही hover करता है इसका paper share in paper 2. But it could be in some cases more than 7 or lesser than 7. So that's completely dependent on the choice of examiner. लेकिन पेपर में आता जरूर है ये चैप्टर. नाउ स्टार्टिंग अप विद लेंसेज, सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है वो ये है कि लेंस बाय इटसेल्फ होता क्या है. व्हाट इज अ लेंस? सो इज देयर एनीवन हु कुड टेल मी व्हाट इज अ लेंस? Okay, so lens is a piece of transparent material that can converge or diverge the light rays. Now, whenever you are dealing with any sort of material which is like kind of transparent and can also converge or diverge the light rays, that is going to be considered as a lens. Now, the point here is कि हमारे पास जो converging या diverging की terms यहाँ पर use हो रही हैं, उनका मतलब क्या होता है? So, whenever you bring the light rays closer to one another and they like cross through or pass through one another at a certain point, that is called converging. तो आप क्या कर रहे हैं? लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहे हैं. In against of it, if I have the light rays and they move away from one another, so what you are doing over here is that you are making the light rays diverge. So that's the concept of convergence and divergence. अब आ जाते हैं types of lenses की तरफ. तो आप में से कोई बता सकता है कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास? Yes, anyone who could tell me the types of lenses? Very good. We have two types of lenses. The first one is concave and the second one is convex. Now, if we talk about concave, तो concave को हम स्पेशल नेम देते हैं. वैसे ही कॉन्वेक्स को भी हमने एक स्पेशल नेम दिया हुआ है बेस्ड ऑन देयर relation or their like procedures with the light, what they do with the light. On the basis of that we have their special names. तो concave को हम diverging भी कहते हैं. So this is also termed as a diverging lens. Well, if we talk about convex, तो convex को हम converging lens भी कहते हैं. Now if we move forward, तो हमारे पास इनकी जो representation है picture से वो भी जरूरी है. So let's draw the pictures of them. So a proper diverging lens would look something like this, and a converging lens would look like this. Now this is convex
on the right side and this one is concave on the left side. Now the point here is कि अगर हम concave या convex की बात कर रहे हैं तो इनके कुछ use cases भी होंगे. तो वो use cases क्या हैं और ये हमें usually कहाँ नजर आते हैं ये भी पता होना चाहिए. So you would observe that your concave lenses are present in places like contact lenses or glasses, as well as in binoculars and in projectors. तो ये हमारे पास कुछ practical life examples हैं. Now, if we talk about the converging lens, you would observe the converging lens is also present in contact glasses, and they are also present in human eye. आप जो अपनी eyes से पूरी दुनिया को देख रहे हैं, like you can see all around yourself, that is only because of the convex lens present in your eyes. And finally, you would observe that the camera is also having the convex lens. Since the camera is made on the concept of human eye, so it is also using the same type of lens, which is the converging lens. तो आपकी आई साइट हो या आपका कैमरा हो वहां पे आपको कॉन्टेक्ट लेंसेज या जो आपके लेंस लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स की फॉर्म में होंगे. दे वुड बी कन्वर्जिंग द लाइट रेज, bringing the light rays closer to one another. Now I'll be drawing the figure of light rays in both of these cases to give you an idea कि हमारे पास जो light rays हैं वो कैसे behave करती हैं. So in any case, whether I'm in the concave or in the convex, जो सेंटर वाली लाइट रे आपको नजर आ रही है वो हमेशा स्ट्रेट चली जाएगी. इट वुड ऑलवेज गो स्ट्रेट unchanged. So we'll just create the centermost light ray going straight. इसके बाद जो आपके पास दो लाइट रेज होती हैं, they behave on the basis of the lens. Now if I have a diverging lens, they would move out, and if I have a converging lens, they would move in like this. So you would see that the light rays have converged at a point over here, and over here you would observe that the light rays have moved away. तो अगर light rays diverging lens में हैं, they would diverge away, while if they are in a converging lens, they would come closer or would converge. So that is the entire concept of converging and diverging lens. Now, moving forward, we need to have an idea of their image formation properties. Like अगर ये image बनाते हैं तो usually इनकी image कैसी होती है. So the diverging lens forms virtual and diminished images. In most of the cases. So in most of the cases अगर आप एक diverging lens use कर रहे हैं तो आप ये खुद ही presume कर सकते हैं that you would be forming a virtual and a diminished image. अब ये virtual diminished का मतलब क्या है इसकी details में हम अभी नहीं जा रहे हैं. We'll go into the details of it afterwards. Now coming to the converging lens or your concave convex lens, तो convex या जो converging lens है आपका ये हमेशा आपकी जो image बनाता है उसमें in most of the cases it will form real
and magnified images. Now, in most of the cases आपको जो images नजर आएंगी कन्वर्जिंग लेंस के अंदर वो होंगी रियल एंड मैग्निफाइड, जबकि डाइवर्जिंग लेंस में आपकी इमेज होगी वर्चुअल और डिमिनिश्ड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज. तो जरा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज को समझ लेते हैं. हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज कितनी टाइप्स की हैं? So properties of image are basically dependent on the image formed by the lens. तो हमारे पास in total तीन प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम कंसीडर करते हुए चलते हैं. The first property is that the image would be real or virtual. Then if we have the first property as real and virtual, तो हमारे पास दूसरी property भी है which is saying that the object is magnified or diminished. And finally, we have the last property, which is upright और inverted. तो हमारे पास upright या inverted तीसरी प्रॉपर्टी है. अब मुझे ये समझना है कि रियल और वर्चुअल का मतलब क्या है, उसके बाद मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, और फिर upright और inverted का मतलब क्या है. So starting up with the first condition over here, which is real or virtual. So an image is considered to be real or virtual on the basis of its position. So if the object and image are on the opposite side of lens, they are considered real. Now let's say if I have a lens over here and this lens is creating an image for this object. ये हमारा object है और इस object के लिए हमारी image बन गई है कुछ इस तरीके से. Now this is my image and this is my object. अब हुआ कुछ ये है कि इस लेंस ने ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई है वो बिल्कुल वैसे ही बना दी है जैसे फिजिक्स ने हमारी जिंदगी के साथ किया है. हमारी जिंदगी और हमारी खुशियां उल्टी कर दी हैं फिजिक्स ने, तो बिल्कुल वैसे ही जो इमेज बन रही है वो भी उल्टी हो चुकी है. तो अब हुआ कुछ ये कि आपके जो लेंस थे इन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि इमेज अब उल्टी बन रही है. लेकिन अभी जो कंडीशन समझने वाली है वो ये कि मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर है और इमेज राइट साइड पर है. सो द ऑब्जेक्ट इज ऑन द ऑपोजिट साइड कंपेयर टू द इमेज. अगर ये ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो इस सिचुएशन में हम इमेज को क्या कहेंगे? दैट द इमेज इज रियल. In such a condition, the image is considered to be real. Now, in against of it, अगर मेरे पास लेंस बना हुआ है और ऑब्जेक्ट रखा है लेफ्ट साइड पर और इमेज भी बन गई लेफ्ट साइड पर ऑन द सेम साइड, तो अब आप नोटिस करें कि आपका ऑब्जेक्ट और इमेज आ गया है सेम साइड पे. सो वी विल कंसीडर सच एन इमेज टू बी वी विल कंसीडर सच एन इमेज टू बी वर्चुअल. तो ये हमारा केस है. नाउ मूविंग बैक टू आवर मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड कंडीशन. तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे विच इज मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड. नाउ मैग्निफाइड इज कंसीडर्ड as when the image is larger than object.
it's magnified. So whenever you have an image which is greater than your object in size, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैग्निफाइड कहेंगे. और अगर हमारी इमेज हो जाए छोटी तो हम उसको कहेंगे डिमिनिश्ड. लाइक आई हैड माय object over here, the image is smaller in size, so this one is considered as diminished. Now in the opposite case, if I had a lens over here, the object was placed like this and this is my image, तो अब मेरी image magnified है या diminished है? Can anyone of you tell me whether my image is magnified or diminished? Magnified, very good. So we would term this as a magnified image. Now, I hope you all are perfectly clear with this. We are now moving forward onto the last property, which is upright or inverted. तो upright और inverted का केस अब हम करने लगे हैं शुरू. तो upright या inverted के केस में आपको ये समझना है that if object and image are similarly placed, it's an upright image. So if I have my lens over here, the object was present like this and the image is also present in the same orientation. Like आपका object देखें upward facing है और आपका image भी upward facing आ गया है. This means that you are creating an upright image. While in against of it, if I am having a lens over here, object is present like this, but the image is facing downwards. तो इस केस को हम क्या कहेंगे, that the image is inverted. So this is the entire concept of upright और inverted images. तो अब हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हो गई हैं कंप्लीट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, तो रियल का मतलब हमारे पास होता है that the object and image are on the opposite side of lens like this one. While if we talk about virtual, so in virtual the object and image are going to be on the same side. Now moving to the second property, we have our magnified or diminished condition. If the image is greater in size than object, it's magnified. If the image is smaller than the object, it's diminished. Like over here, we have the condition of diminished image, while over here we have the condition of magnified image. Now on to the last one, we have upright or inverted case. So in this particular case, you would see that if the image and object are in the same orientation, like over here, so they'll be considered as upright. जबकि अगर आप object और image की बात करें in terms of their position and they are oppositely placed, like object was facing upward while the image is facing downward, तो इसको हम कहेंगे inverted image. I hope all of you are perfectly clear with this. अगर किसी को कोई query है, just feel free to ask. Yes, anyone having any sort of query? Or is every one of you perfectly clear? Okay, perfect. So it seems like all of you are perfectly clear. So we'll now move forward onto the image formation by a lens. तो अब हम करने लगे हैं image formation. We'll start with our convex lens. Or a convex lens at, in fact, for an object
at f equals to 3 centimeter and HO equals to 2 centimeter. Okay, so these are some terms written over here. मैंने F लिखा है, फिर HO लिखा है, और आखिर में P is equals to 2F लिख दिया है. So what are all of these terms and conditions which I have written down over here? सबसे पहले अगर हम बात करें F की, तो F हमारे पास होता है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या चीज है ये हम आगे पढ़ेंगे. अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि F इज बेसिकली फोकल लेंथ, जिसको हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ HO, तो HO भी होता है और HI भी होता है. सो स्टार्टिंग विद HO, हमारे पास HO होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो इट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट and it is measured in centimeters. While if we talk about HI, तो HI हमारे पास होता है हाइट ऑफ इमेज, और इसको भी हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में. तो ये भी सेंटीमीटर्स में मेजर हो जाएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आवर लास्ट थिंग विच इज P, और P के साथ हमारे पास Q भी होता है. तो पहले P को समझेंगे फिर Q को समझेंगे. तो P हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस. So the object distance from lens is measured in centimeters or F. F is basically your focal length. तो आप फोकल लेंथ में भी मेजर कर सकते हैं P को और Q को भी, या फिर आप चाहें तो सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं. So Q is your image distance from the lens. Now this one is also measured in centimeters or focal length. तो मल्टीपल्स ऑफ फोकल लेंथ में मेजर किया जा सकता है. जैसे यहाँ पर हमने 2F लिख दिया है, सो F इज ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर्स, तो P हमारे पास इक्वलेंट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर्स के. I'll just do this for you people once again. तो let's say हमें जो है यहाँ पर कुछ डाटा गिवन है that the focal length is at 3 centimeter, the height of object is 2 centimeters, and the value of P is 2F. अब 2F का मतलब है that I'm going to multiply 2 with 3, क्योंकि F हमारे पास 3 था, and I'll have 6 centimeter as my object distance. अब यहाँ से जो कुछ चीज़ें आप समझोगे अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको पहले अपना पेन डाउन करना होगा. यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पीपल, और फिर उसके बाद आप बनाएंगे अपनी इमेज once I'm done explaining. So the first thing is that you are going to have your lens placed like this. यहाँ से बिल्कुल सेंटर से एक आपने लाइट रे या एक लाइन गुजारनी है, and that is called your principal axis. So this is your principal axis, और यही वो लाइन है जिसके अकॉर्डिंगली हम सारे काम करते हैं, और इसी लाइन पर हमने सारी वर्किंग करनी है अपनी. दिस इज योर लेंस, वेदर बी इट योर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, पूरी वर्किंग सब कुछ एक जैसा ही होता है. द ओनली डिफरेंस इज के कन्वर्जिंग लेंस में लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती हैं, जबकि डाइवर्जिंग लेंस में लाइट रेज ने डाइवर्ज होना है. Now in the very center you would have a point over here which is called the optical center. Now all of these labelings are very important. ये सारी लेबलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये नहीं होंगी तो आपसे कभी भी इमेज ड्रॉ नहीं हो पाएगी. फिर आपके पास आता है फोकस पॉइंट.
Now the focus point is not only present in the forward path but also in the backward position. तो पीछे भी फोकस होगा और आगे भी फोकस होगा. और आपके पास एफ होता है, फिर टू एफ भी होता है. अगर आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ज्यादा लंबा है तो आप थ्री एफ भी लिख सकते हैं वहां पे. बट इट शुड बी एट द सेम डिस्टेंस. लाइक माई वैल्यू ऑफ एफ इज 3 सेंटीमीटर. तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से 3 सेंटीमीटर मेजर करके पॉइंट मार्क किया है एंड दैट इज कंसीडर्ड माय फोकस. तो इसको हम कहते हैं फोकस, रिप्रेजेंट करते हैं एफ से. और फिर मजीद 3 सेंटीमीटर आगे हमारे पास आ जाता है टू एफ एंड द साइकिल गोज ऑन. आप फिर फर्दर 3 सेंटीमीटर के बाद थ्री एफ लिख सकते हो, फिर 3 सेंटीमीटर के बाद फोर एफ भी लिख सकते हो. In the same way, we have at the back side a distance of 3 centimeter, after which I mentioned f. फिर उसके बाद 3 सेंटीमीटर आगे हमारे पास आ गया है टू एफ एंड सो ऑन. So this is how you create your position of f on the basis of the markings. Once I am done with this, तो हमारे पास एक लेंथ आती है from the optical center until the focus, और इस लेंथ को हम कहते हैं फोकल लेंथ. अब समझना ये है कि ये जो पॉइंट है फोकस, ये है क्यों, व्हाट इज द यूज ऑफ इट एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. तो वजह ये है इसको बनाने की दैट व्हेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ कन्वर्जिंग लेंस, तो आपकी एक लाइट रे ने तो जाना है स्ट्रेट. लाइक इफ आई क्रिएट अ लेंस फॉर यू पीपल, this is my principal axis, my optical center, and my focus at the back and in the front. Now, let's say the object was present over here. तो एक लाइट रे तो जाएगी स्ट्रेट लाइक दिस. तो ये हमारे पास चली गई है लाइट रे स्ट्रेट, और इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कोई सा भी लेंस हो, वेदर बी इट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, आपकी एक स्लांटेड लाइट रे स्ट्रेट चली जाएगी विद नो डिफरेंस. देन आई विल हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन गोइंग अंटिल द सेंटर, गोइंग अंटिल द सेंटर हॉरिजॉन्टली, और फिर ये करेगी कन्वर्ज खुद को एंड पासिंग थ्रू दी फोकस. तो जो हमारे फोकस भाई हैं उनका सिर्फ एक पर्पस है एंड दैट इज टू कन्वर्ज द लाइट रेज थ्रू दी प्रिंसिपल एक्सिस. फोकस का पर्पस क्या है मेरे पास? टू कन्वर्ज द लाइट रेज थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर और थ्रू दी प्रिंसिपल एक्सिस. फोकस सिर्फ एक काम कर रहा है दैट इट इज causing the light ray to pass through the प्रिंसिपल एक्सिस. दैट्स इट. ये है हमारे फोकस का काम. इसके अलावा फोकस का कोई और पर्पस नहीं होता. एक और लाइट रे भी बनती है विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन आई टेल यू हाउ दिस वन वर्क्स. सो आई विल हैव अ फोकस इन द बैक साइड एज वेल. लाइक फॉरवर्ड में 3 सेंटीमीटर आगे हमने अगर फोकस बनाया है, तो बैक साइड पे भी 3 सेंटीमीटर पीछे हम फोकस बनाएंगे. नाउ वी विल हैव a line passing through the focus going until the center of the lens and then going horizontal. तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी. Now the thing over here is कि ये लाइट रे इंपॉर्टेंट नहीं है. ये सिर्फ एक बार 2017 में असेस हुई थी. उसके अलावा इस लाइट रे का कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया. So you just need to have an idea of this light ray or you could just skip over it. लेकिन बस आइडिया होना जरूरी है. Now we are going back to our initial question which was saying that f was 3 centimeter, height of object was given as 2, and the distance from the lens was 2f which is equivalent to 6 centimeter. Before starting with the actual drawing for this particular lens, I need a confirmation from all of you if all of you are perfectly clear, or do you have any sort of queries?
जी, आप सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट या कोई क्यूरी है इसमें? Whatever we have studied until now is perfectly clear to all of you. Okay, so we are now going to start with the actual drawing for this lens. Usually ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको लेंस ड्रॉ करके दे देते हैं. In that particular condition, it's very easy to do the rest of the working. अदरवाइज हमें लेंस अपनी मर्जी से बनाना होता है, और फिर आप लेंस कितना बड़ा या कितना छोटा बनाते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर पिक एंड योर चॉइस. तो एग्जामिनर आपको मना नहीं करेगा until it is fulfilling his needs of the particular image that he wants. तो जैसी वो इमेज चाहते हैं, अगर आप वैसी इमेज बना देते हो तो एग्जामिनर को कोई परेशानी नहीं है. नाउ I have got my lens over here. This is the optical center. The focus would be drawn at 3 centimeter from the optical center. तो ये ऑप्टिकल सेंटर से हम स्टार्ट हुए और 3 सेंटीमीटर पर आकर रुक गए, right over here. So this is a perfect 3 centimeter. In the forward, we'll do the same in the backward direction as well. तो यहाँ पर हमारे पास f आ गया है. Now if we want to draw 2f, तो हम मजीद 3 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे and we'll draw 2f over here. In the same way, we can do it in the forward direction as well. Although 2f बनाना necessary नहीं होता है, so if you guys don't want or don't feel like to draw the value for 2f, तो आप 2f skip कर सकते हैं. That's completely okay. Now since I had to draw 6 centimeter, तो हमने 6 centimeter की marking यहाँ पर ले ली है, which is 2f, as you can see. Then I need to create a height of 2 centimeter. तो अब मैं height draw करने लगा हूँ 2 centimeter from the position of 2f. तो यहाँ से हमने start किया है and I've created a height of perfect 2 centimeter right over here. Once I'm done with this, तो अब हमारे पास आ चुका है 2f और f दोनों. 2 centimeter की height भी drawn है. What I just need to do over here is that I'm going to carry my slanted straight line right from here, and then I'm going to take a horizontal line all the way until here and pass it through f. f से हमें करवाना है इसको पास. अब जैसे ही मैं f से पास करवाऊंगा अपनी लाइट रे को, you would observe that the light ray is going to cut through the initial light ray at some point. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि आपकी दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कट थ्रू कर रही हैं. ओवर हियर यू कैन जस्ट ड्रॉ योर इमेज, और इस इमेज का आपने मेजर करना है लेंथ या हाइट कह लें. सो द हाइट इज टू बी मेजर्ड. इट टर्न्स आउट टू बी 1.9. So this is 1.9 centimeter and the previous one was 2 centimeter. Now we need to bring out our concepts of properties. तो जो हमारी properties थी उनमें सबसे पहले हमारे पास था real और inverted. Then we had our second property, which was magnified and diminished. And finally we have the last one, which was either upright or inverted. अब पॉइंट ये है कि मेरी इमेज रियल है या वर्चुअल है. इज इट रियल और वर्चुअल? यू गाइज नीड टू टेल मी. इज माय इमेज ओवर हियर रियल और वर्चुअल? एनीवन?
इट्स रियल, वेरी गुड। इसको हम रियल कंसीडर करेंगे बिकॉज रियल की हमने सिचुएशन पढ़ी थी दैट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द opposite side. If they are on the opposite side, it's considered as real. तो हमने भी फिर इस केस को देखते हुए कहा है that we have formed a real image. Now, moving forward, we have the second condition which is magnified or diminished. तो आप में से कोई बता सकता है whether my image is magnified or is it diminished? The object was 2 centimeter, the image is 1.9 centimeter, so I would consider it to be diminished. Very good. Now the last one is upright or inverted. तो मेरी image upright है या inverted है? Anyone having any idea? Inverted. Very good. तो magnified diminished की condition देखते हैं यहाँ पर. It was saying that if you have the image which is larger than object, it's magnified. Otherwise it would be considered as diminished. तो आपकी जो image बन रही है that is smaller than your object. Object was 2 centimeter, image is 1.9, तो आप इसको diminished consider कर लेंगे. In the same way we have upright or inverted. तो upright or inverted का case कुछ ऐसे है that if the object and image are placed on the same side or on the same orientation, like this one, they are placed in the same orientation. The object was facing upward, image was also facing upward, तो हम कहेंगे इसको एक upright image. लेकिन अगर मेरा object और image oppositely placed हैं तो हमने अपनी image को नाम देना है inverted. तो इस तरीके से हमारी जो image बन रही है that is inverted, diminished and virtual. So you could just remove out all the other unnecessary properties और आप इसको कह सकते हैं एक real, diminished and inverted image. So this is how you could create the image as well as get out of the properties of it. So you can just get the properties as well as create it, and that shall not take more than 2 minutes for you guys. आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए. यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस 3 मार्क्स के आते हैं. So they want you to create the image as well as mention the properties. So the first mark is on the placement of object and focus. जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्ट और फोकस ड्रॉ कर लेते हो आपको फर्स्ट मार्क मिल जाता है. द सेकंड मार्क इज ओवर हियर and the third mark is on the correct properties. So this is how you would gain all of your 3 marks from this particular question. अब ये तो हो गई मार्किंग स्कीम. एग्जामिनर रिपोर्ट की अगर बात करें तो हमारे जो चीफ एग्जामिनर भाई हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनएबल टू ड्रॉ द इमेज करेक्टली बिकॉज दे हैव प्लेसमेंट इश्यूज फॉर द फोकस एज वेल एज द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट और फोकस को प्लेस करने में ज्यादातर स्टूडेंट्स को मसले होते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर एरर्स क्रिएट करते हैं और उनकी जो इमेज है वो गलत हो जाती है. बट द गुड थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज करेक्टली. ज्यादातर स्टूडेंट्स ने प्रॉपर्टीज को सही से डिफाइन कर दिया था. Now I'm going to give you a couple of questions और ये questions आपने solve करने. You need to draw the images of them and finally tell me the value of size of image as well as whether it is real or virtual.
ओके, यू नीड टू सॉल्व दिस, और ये दोनों ही क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने. यू नीड टू ड्रॉ द इमेजेस फॉर ईच वन ऑफ देम and tell me what are the properties for this particular image as well as the size of the image. Now, since we are perfectly clear with both of these questions, you guys have got your answer. We are now going to do some sort of indifferent question where we need to draw an image for an object at 0.5 f with height of 2 centimeter and f is equals to 3 centimeter. तो अब मुझे एक इमेज बनानी है फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट 0.5 f. तो 0.5 f पे हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट द पोजीशन इज वेरी डिफिकल्ट. लाइक ये 0.5 f आ गया है मेरे पास. सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ऑप्टिकल सेंटर. Take 3 centimeter in the forward, which would be my value or position for f. The same goes for the back side. I'll draw the focus point over here as well. Once I'm done with this, तो अब मुझे बनानी है अपने object की position, which is 0.5 f. So it's 0.5 times 3, which is 1.5, and I will take 1.5 in the back side from the optical center. तो यहाँ पर बनना चाहिए मेरा object. Now for that, I would take the height as 2 centimeter. So the height is now perfectly 2 centimeter. अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक लाइट रे तो चली गई है slanted straight through the optical center, and the second one is going first of all horizontally towards the lens and then going through the focus from here. Now here comes the problem. These light rays do not seem to be converging at any given point anywhere forward. ये कभी भी एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होने की पोजीशन में नजर नहीं आ रही है. So in such a case, what we do is we just pick up our light rays and carry them in the backward direction. अब इसको हम कैरी करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में. So we'll carry it in the form of some dotted line like this, and we'll do the same for the other light ray as well. तो ये हम लेकर गए हैं बैक साइड पर, एंड यू वुड ऑब्जर्व कि अब ये बैक साइड पर इस जगह पे कन्वर्ज हो गए हैं. नाउ दे हैव कन्वर्ज्ड ओवर हियर. सो आई विल जस्ट ड्रॉ माय इमेज on this particular point like this. So this is going to be my image. I'll repeat this entire process. Initially you drew all of your light rays just like the way you used to do previously, लेकिन यहाँ पर light rays जो हैं वो आगे converge नहीं हो रही हैं. So we'll just carry them in the backward direction in a straight line. जैसे ये हमारे पास light ray backward direction में आ गई है. We'll do the same for this one. अब इस लाइट रे में जो फॉरवर्ड पोर्शन है सिर्फ उसी को कंसीडर करते हुए आपने बैक साइड पर कैरी करवाना है. सो यू वुड हैव इट लाइक दिस.
एंड यू वुड ऑब्जर्व कि आपकी जो लाइट रे है वो कुछ इस पोजीशन पे कन्वर्ज हो गई है. दे हैव been like together or they have crossed over on this particular position. Now this is how you create such images और इसकी जो properties बनेगी हमारे पास वो बनेगी virtual, since the object and image are on the same side, so this is virtual with magnified size and it is upright. I hope this is perfectly clear. It's virtual, magnified and upright. Very good, Amna. So all of you seem to be perfectly clear. If any one of you has got any sort of query, just feel free to ask. Otherwise, we'll wrap it up for today and we'll then continue in the next class. So shall we wrap up, or is there anyone having any sort of queries? Yes, I need a confirmation from all of you. Are you all perfectly clear? Okay. So that's it for today. We'll then continue in the next class, inshallah. Take care, everyone. Allah Hafiz.